Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Fahad Ahmed and this is my second vlog. आज के vlog में I'll talk about how I lost over 40 pounds in a little over 2 months and I went from looking like this to this. इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैंने वो वेट कम कैसे किया था. I am going to talk about कि मैंने वो शुरू में वेट पुट ऑन कैसे किया सारा का सारा. Growing up, I was never a skinny child. मैं शुरू से हर क्लास में अपनी वो जो एक मोटा बच्चा होता है जिसका मजाक उड़ाया जाता है, मैं वो बच्चा था. और मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको पता सबको कि मैं कभी भी I was never the skinny child. I was made fun of. मुझे उस चीज़ से इतना फ़र्क नहीं पड़ता था emotionally, mentally. लेकिन I got used to the idea that I was fat, I'm going to stay fat and it doesn't bother me anymore. जब मैं पाकिस्तान से यहाँ पे मूव किया 2017 में, I started college in fall और मैंने उस टाइम पे नोटिस करना शुरू किया कि मैं ज़्यादा खाना लग गया हूँ. I had a very bad appetite. I was getting hungry every few hours. मैं फ्राइड फूड खा रहा था, मैं एक फास्ट फूड पे काम कर रहा था एंड आई वाज ईटिंग देयर एवरी सिंगल डे. कॉलेज जाता था, कॉलेज में भी आई वाज गेटिंग हंग्री इन बिटवीन क्लासेस. आई वुड गो टू सबवे, गेट अ सैंडविच. आई वाज ईटिंग अ लॉट ऑफ शुगरी स्टफ. आई वाज ईटिंग अ लॉट ऑफ फ्राइड फूड. उसी टाइम पे मैंने बेकिंग करना शुरू की थी, तो आई वाज ईटिंग अ लॉट ऑफ स्वीट स्टफ एज वेल. तो आई पुट अप अ लॉट ऑफ वेट. It wasn't as much on the scale पे I was at 220 pounds, which was still a lot, लेकिन देखने में I wasn't at my best. I had very bad belly fat और मेरे मुंह पे काफ़ी वेट पुट ऑन हुआ था. जैसा पिक्चर थी शुरू में वीडियो जब स्टार्ट हुई उस टाइम पे और thumbnail में भी. I had a lot of weight around my face, around my chin area. तो मैं pictures नहीं लेता था. I was never taking selfies. I would never open Snapchat. Snapchat भी करूँगा तो I was the one who would post pictures of the black screen या फिर वो पीछे गाने लगा के गाड़ी चलाने वाली वो वाली snaps होती थी. मेरी कभी शक्ल नहीं होती थी मेरी snaps में. मेरे Instagram पे भी I would never post pictures of myself क्योंकि I wasn't confident in what I looked like. I'm very body positive. It's not that I'm shaming anybody who's fat or who's overweight. लेकिन it wasn't working for me. I wasn't feeling confident. I wasn't feeling good. I was getting tired. काफ़ी lethargic हो रहा था मैं. तो mid-March में जाके 2018 में I looked at myself in the mirror and I don't want to offend anybody, but I was disgusted at myself. I was fat and I wasn't feeling comfortable. I was having a lot of back pains. I was sweating a lot. मुझे तबीयत अवज़ार होने लगी थी बहुत ज़्यादा. I wasn't feeling confident बिल्कुल भी अपने आप को देख के. And it was that moment. मैं सर्च कर रहा था उससे पहले काफ़ी देर से. मैं पता नहीं कितना पुराना शौक है, मैं डाइट्स वगैरह देखता रहता हूँ, वर्कआउट देखता रहता हूँ. करता कभी भी नहीं था, बस ऐसे देखने का शौक था. तो ऐसे ही मैं एक दफ़ा किसी ऐड वगैरह पे यूट्यूब की वीडियो पे चल रहा था कीटोजेनिक डाइट का. तो आई गिव इट अ लुक. मैंने कहा अच्छा ठीक है, इट लुक्स लाइक अ फैड. काम तो नहीं करेगी, सारे बात करते हैं, दावे करते हैं, काम कोई डाइट नहीं करती. उस टाइम पे देयर weren't a lot of articles about ketogenic, तो इसलिए मुझे पता नहीं था कि if it's actually a thing that would work for me. It sounded stupid. It was high fat, like 75% fat, very low carb and moderate protein. तो मैंने कहा ठीक है, ट्राई कर लेते हैं. there is nothing to lose over here, so I'll try. I started my ketogenic journey on, I don't remember the exact date, but it was mid-March. मैंने कोई before pictures नहीं ली थी. जो thumbnail में picture थी, it was not a picture intended कि मेरी weight loss journey के बाद मैं ये picture लगाऊंगा. लेकिन मैंने कोई pictures नहीं ली थी उस टाइम पे. I wasn't feeling confident about the diet. I was like ठीक है, ट्राई कर लेते हैं, काम तो करना नहीं किसी ने भी. जब तक वर्कआउट नहीं करूँगा तब तक वजन तो मेरा कम नहीं हो सकता और वर्कआउट का मुझे शौक है नहीं. मैंने डाइट शुरू की, मैंने चीज़ें ख़रीदना शुरू की उसके बारे में. आई वाज ईटिंग हाई फैट, आई वाज ईटिंग एग्स, लॉट ऑफ मेयोनेज़, इस तरह की चीज़ें खा रहा था. कार्ब्स मैंने बिल्कुल कट डाउन कर दी थी अपने लाइफ से. तो आफ्टर द फर्स्ट वीक आई फेल्ट वेरी वीक, वेरी लेथार्जिक. और मुझे समझ नहीं आ रही थी मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि आई वाज फॉलोइंग व्हाट दे सेड ऑन द इंटरनेट कि ये करना है, ये खाना है, इस तरह चलानी है कीटोजेनिक डाइट. आई वुडंट गो इनटू टू मच डिटेल अबाउट कीटो. If you guys want a video on that, just let me know. लेकिन I think there's a lot of videos online which can let you know कि ketogenic diet है क्या और कैसे करनी है. They aren't very detailed and clear, so I might do a video about how I did my weight loss और मैंने अपनी कैसे किया था daily basis पे अपना ketogenic का. लेकिन मैंने after my first 2 weeks, I was at a very bad point. I was very weak. मैं अपना कोशिश कर रहा था कि मैं एनर्जेटिक फील करूँ, क्योंकि मैं जितने भी वीडियोस देख रहा था, जितनी भी चीज़ें देख रहा था, एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट कि कीटो की वजह से दे आर फीलिंग सो लाइवली, सो हैप्पी, दे आर एनर्जेटिक, काम कर रहे हैं ज़्यादा पहले से ज़्यादा. लेकिन मैं उस तरह का नहीं था, मेरे से नहीं हो रहा था. आई ट्राइड वर्किंग आउट वन डे एंड आई वाज अबाउट टू पास आउट. So I came home, I checked my weight and it went down by, I think it was
After the first week, it was 10 pounds. उसमें ठीक है काफ़ी ज़्यादा वाटर वेट भी होता है. I'm not gonna totally disprove that. So it was great. Losing 10 pounds in a week is wonderful. लेकिन I wasn't feeling good at all. मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी थी. I was very lethargic. I was very lazy. मेरा कोई काम करने का दिल नहीं जाता था. और I tried to work out one day and I almost passed out. तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ. मैं सारी चीज़ें फॉलो कर रहा था जो नेट पे लिखी आती थी. उस टाइम पे मुझे एक पेज मिला कीटो कनेक्ट के नाम से. इट्स अ चैनल ऑन यूट्यूब एंड इट्स अ वेरी गुड चैनल इफ़ यू वांट टू स्टार्ट आउट ऑन कीटो. मैंने उनकी रेसिपीज देखना शुरू की. मैंने उनकी बाकी जो टेक्निक्स वगैरह थी, टिप्स वगैरह थी, वो देखना शुरू किया. और मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई वॉज डूइंग इट सो रॉन्ग. आई वॉज स्टार्विंग माई सेल्फ टू द पॉइंट वेयर आई वॉजंट डूइंग इट इंटेंशनली, लेकिन मैं कर रहा था. आई वॉजंट ईटिंग प्रॉपर फूड. आई वॉजंट ईटिंग हेल्दी नॉर्मल व्हाट अ हेल्दी नॉर्मल पर्सन वुड ईट. तो मैंने रियलाइज़ किया कि आई शुड प्रॉबेबली रीथिंक. मुझे थोड़ा सा चेंजेस करने चाहिए ज़िंदगी में. थोड़ी सी डाइट ये कंटिन्यू करता हूँ लेकिन थोड़े चेंजेस के साथ. तो अराउंड सेकंड थर्ड वीक आई वाज फॉलोइंग द कीटो कनेक्ट प्लान जो उनका चल रहा था. उनकी पेजेस पे जो रेसिपीज़ वगैरह थी मैं फॉलो कर रहा था. माई फैमिली वॉज वेरी सपोर्टिव. मेरी मदर जो है शी यूज्ड टू कुक फूड फॉर मी. शी न्यू व्हाट आई वाज ईटिंग. शी न्यू माई मैक्रोज. फैट मेरा 75% पे रहता था. मेरी कार्ब्स जो है आई वेंट वेरी लो ऑन माई कार्ब्स एंड I don't know, it was working for me, but I wouldn't suggest it क्योंकि मेरे फैमिली में जिन्होंने कीटो ट्राई किया उसके बाद they weren't happy with how low the carbs were. I was keeping my carbs below 5 grams. सिर्फ trace carbs आ रही थी मेरी बॉडी के अंदर. I wasn't eating any kind of carb on the side. तो मेरी मदर ने काफ़ी हेल्प की. she was making me food all the time. अगर मुझे को भूख लगी थी, मुझे बर्न आउट हो रहा था, तो she realized it. She never demotivated me. उन्होंने कहा ठीक है स्टार्ट किया है तो फिर उसको कंप्लीट भी करो और कंटिन्यू करो इस डाइट के साथ. सेकेंड या थर्ड वीक में जाके आई स्टार्टेड फीलिंग गुड अगेन. लेकिन फिर मैं दोबारा इम्पेशेंट था तो आई वांटेड टू एक्सेलरेट माय वेट लॉस. मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर दी उस टाइम पे. सो इंटरमिटेंट फास्टिंग और IF इज़ व्हेन यू आर ईटिंग फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम. द मोस्ट कॉमन इज 8 hours ऑफ ईटिंग टू 16 hours ऑफ फास्टिंग. एक दिन के अंदर यूर फास्टिंग. अब वो विंडो आपके ऊपर है कि आपने कितनी ज़्यादा देर के लिए फास्ट करना है, कितनी ज़्यादा देर आपको खाने के लिए चाहिए, किस टाइम पे आपने करना है. सम पीपल स्टार्ट एट 8 AM एंड स्टॉप ईटिंग एट 4 PM और फिर 4 PM से अगले दिन 8 AM तक दे फास्ट. When I was doing it, I would start eating at 12 PM. I would skip breakfast. I would start eating at 12, and then I would continue it till 8 PM. और फिर 8 PM से अगले दिन 12 PM तक I would fast. कि मैंने continue किया. I started from 8 hours and 16 hours to a window of 20 hours of fasting and 4 hours of eating. इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि कीटोजेनिक पे आप काफ़ी हाई फैट खाना खा रहे होते हो. High fat keeps you full for a much longer period of time compared to a conventional diet. तो मुझे मसला नहीं था. I continued it till let's see mid March मैंने शुरू किया था और फिर मैंने ख़त्म किया था on the 70th day of my of the start of the journey. 70th day पे I stopped keto. I stopped intermittent fasting and the results were extreme. They were nothing like I expected. So on the last day I was down from 220 pounds to 180 pounds. I lost 40 pounds which is insane for me. मतलब मुझे कभी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतना वेट कम कर सकता हूँ इतना टाइम के अंदर. और उसके बाद not only did I lose that weight, I gained muscle mass. मेरा muscle mass बहुत extreme नहीं था लेकिन मेरा muscle mass when I started was at 44% and I upped it to 52%. Body fat percentage मेरी came down from 23% to 14%. I will leave all of this down in the description box so that you can see it. लेकिन if you understand how body fat works, how muscle mass works, that's how it worked out. Or I looked at myself in the mirror and I was happy. I wasn't wearing my old clothes. मुझे पूरे नहीं आ रहे थे मेरे पुराने कपड़े. I went from a size XL to a size medium. So it was quite an experience. I went from looking, I mean, I wouldn't say I was looking bad or I wasn't confident at all. I wouldn't even imagine sitting in front of a camera with all that weight that I had because I wasn't body confident at that time. I wasn't happy with the way I looked. लेकिन अब मेरे में उस वजह से उस जर्नी के बाद से जो कॉन्फिडेंस आया है, it's more than the weight loss. It's not about how you look, it's about how you feel. If you're comfortable in your skin, you are overweight, you're obese, it doesn't matter. If you're comfortable in your skin, it's perfectly fine. But when you start having health problems and when you start having, when you start questioning yourself and when you don't feel comfortable in your own skin, that's when you know that you have to make a change. So मेरे लिए ketogenic worked out wonderfully. If you have conditions, if you are not sure about your body, if you don't get medical tests done frequently, don't try to do it after you start keto. Get enough knowledge, try to be
as adequately prepared as you can be before you start. And if you have any questions, any concerns about keto, I have been through the experience. I know what I'm talking about. Intermittent fasting भी इसी तरह की होती है. Intermittent fasting में भी there's a lot of myths surrounding it. काफ़ी लोग मना करेंगे आपको, काफ़ी लोग against जाएंगे इस idea के. अगर आप देसी घर से हैं तो especially I can understand कि आपकी family अगर आपको support नहीं करती इस चीज़ में, क्योंकि it sounds insane. मतलब when I told my mom about it, she acted like it was the end of the world, that I'm not gonna eat any proper food. मैं रोटी नहीं खाऊंगा, चावल नहीं खाऊंगा, मैं जिंदा कैसे रहूँगा. तो वो चीज़ें हैं. If you have any questions about it, if you have any concerns, if you want me to make a video on how I did keto on a daily basis, मैंने मेरी diet plans क्या थे, मैं अपने macros कैसे monitor करता था, so I will definitely make a video about it. Just let me know. Alright everybody, this brings me to an end with this video. Thank you so much for sticking around. If you liked today's video, give it a big thumbs up, leave a comment below with whatever you want to see next, and subscribe to my channel. I'll see you tomorrow.